टॉपिक आपके लिए चूज़ किया। ऑलरेडी हमने इस पे 2 लेक्चर दिए हैं। ये तीसरा लेक्चर है NEP 2020 पे जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, एजुकेशन रिलेटेड जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे मुल्क ने इसमें लॉन्च किया है, तो उसके बारे में एक फुल वीडियो हम आज बनाएंगे जो हमारे स्टूडेंट्स है, ताकि बहुत सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं तो इसको जानना इसको ज़रूरी है, ताकि जो स्पेशली जो टीचर्स वर्क है उनको तो इसकी इंफॉर्मेशन ज़रूरी होना चाहिए। और यहाँ पर हम आज इसी पॉलिसी की बात करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसमें हम सारा डिटेल में देखेंगे इसमें कितने चैप्टर्स है, कितने पार्ट्स है, और किस किस पार्ट का और किस किस चैप्टर पर जो है वो किस पे स्ट्रेस देता है। उसमें है अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ऑन 29 जुलाई 2020। तो ये आपको पहले डेट याद रखना है कि ये वाली जो पॉलिसी है कब इसका जो है ये अप्रूव हुआ है, 29 जुलाई 2020। इट आउटलाइंस द विजन ऑफ इंडियन न्यू एजुकेशन सिस्टम। द न्यू पॉलिसी रिप्लेसेस द प्रीवियस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1900। तो किस किस पॉलिसी को इसने रिप्लेस किया है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो थी 1986 की, जो राजीव गांधी के दौर में आई थी। द पॉलिसी एम्स टू ट्रांसफर इंडियन एजुकेशन सिस्टम बाय 2040। तो ये इसका मेन क्रैक है जो पहला आप यहाँ पर स्लाइड से देख सकते हो सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनियन कैबिनेट 29 जुलाई 2020 न्यू एजुकेशन सिस्टम है ये, और इसका जो मेन फोकस है वो ये है कि दैट दिस पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 द पॉलिसी एम्स टू ट्रांसफर इंडियन एजुकेशन सिस्टम बाय 2040। तो इसका जो मेन मकसद था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला। दूसरा इसमें जो है द विजन ऑफ द NEP 2020 जो है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEC एंड एजुकेशन सिस्टम रूटेड इन द इंडियन इथियोस दैट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू ट्रांसफर इंडियन दैट इज द भारत सस्टेन्ड इनटू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट and knowledge society by providing high quality education to all and thereby making India is a global knowledge super power। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। इसका जो मेन मकसद था विजन ऑफ जो इसका है कि यही है कि हमें क्या करना है कि ये हमारे मुल्क की जो एक्चुअल जो इसकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है उनको हमें स्ट्रांग बनाना है, contributing directly on transforming India that is Bharat sustained into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all, thereby making India is a global knowledge superpower। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये डियर स्टूडेंट्स आप इसमें देख सकते हो, इसका ये मेन फोकस था। इसके बाद है इसमें और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो ये है जानना ज़रूरी है। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसके 4 पार्ट्स हैं, आप देख सकते हो। पहला स्कूल एजुकेशन के बारे में, दूसरा है हायर एजुकेशन के बारे में, फिर है अदर की एरियाज ऑफ फोकस है, फिर मेकिंग इट हैपन। तो ये इस वाले में इसमें 4 पोर्शंस हैं जिनको डिस्कस किया गया। इसके बाद है इसमें स्कूल पार्ट की बात अगर हम करेंगे उसमें 8 यूनिट्स है, चैप्टर्स है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशन लर्निंग, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड अर्जेंट एंड नेसेसरी फॉर एक्सट्रा लर्निंग, कॉटलाइन ड्रॉप आउट रेट्स एंड इंश्योरिंग द यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। तो ये इसमें था स्कूल एजुकेशन में। करिकुलम पेडागोजी इन स्कूल लर्निंग शुड बी होलिस्टिक इंटीग्रेटेड एंजॉयबल एंड एंगेजिंग। टीचर जो है 5th चैप्टर में आप ऑलरेडी कल मैंने आपको बोला इक्विटेबल इंक्लूजन एजुकेशन है, लर्निंग फॉर ऑल, एजुकेशन रिसोर्सिंग एंड एफिशिएंट गवर्नेंस थ्रू द स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड उसमें है ये हाँ स्कूल कॉम्प्लेक्स एंड क्लस्टर स्टैंडर्ड सेटिंग्स इन एक्रेडिटेशन फॉर द स्कूल एजुकेशन। तो ये स्कूल जो इसका जो पहला पार्ट है स्कूल एजुकेशन के बारे में 8 चैप्टर्स है और अलग अलग इसमें इश्यूज और जो है डोमेन्स को डिस्कस किया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए ECC पहला, 5th है टीचर्स, फिर है इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन 6th है, एंड लास्ट में एक्रेडिटेशन फॉर द स्कूल एजुकेशन वो लास्ट वाला ये है। इसके बाद हम जाएंगे हायर जो सेकंड पार्ट है इसका हायर एजुकेशन क्वालिटी यूनिवर्सिटी, उसमें फिर बहुत सारे यूनिट्स चैप्टर्स है 9 से लेकर 19 तक। उसमें पहला क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन है, टुवर्ड्स मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन है, ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट्स है, मोटिवेटेड एनर्जाइज कैपेबल फैकल्टी है, इक्विटी एंड इंकल्जन है, टीचर एजुकेशन है, कैटलाइजिंग हाई क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड्स थ्रू ए न्यू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप ऑफ फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सीखने के लिए जो इंपॉर्टेंट है इस पॉलिसी ने इन पॉइंट्स पे ज़्यादा जोर दिया। हायर एजुकेशन में डियर स्टूडेंट्स ये वाला है चैप्टर नंबर 9 में है क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़, 10 में इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरिंग टुवर्ड्स मोर होलिस्टिक, ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट, मोटिवेटेड एनर्जाइज्ड, इक्वलिटी, टीचर एजुकेशन है, अमेजिंग वोकेशनल है, और ये बहुत सारे हैं इसमें हायर एजुकेशन पार्ट में आते हैं। और है इसमें हायर अदर कीज़ में जो है और एक है अदर कीज़ एरियाज फोकस है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, एडल्ट एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड आर्ट्स एंड कल्चर है, टेक्नोलॉजिकल यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन है, ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन है, एंश्योरिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये और एक पार्ट में इसमें है, 4th में ये वाली यूनिट्स है।
फिर है पार्ट जो फोर्थ है इसमें मेकिंग इट हैपन, वो है स्ट्रेंथनिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, फाइनेंसिंग है अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, इम्प्लीमेंटेशन एंड लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन लिस्ट, उसमें है ये। फिर इसमें अगर हम बात करेंगे, हाँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ, इसमें जो मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है डियर स्टूडेंट्स वो ये है, रिकॉग्नाइजिंग आइडेंटिफाइंग फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेस, बिटवीन द करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिटवीन वोकेशनल एकेडमिक स्ट्रीम्स, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन conceptual understanding, creativity and critical thinking, promotion multilingualism and the power of language in teaching and learning, skills such as communication or comprehension, teamwork and resilience। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, ये प्रिंसिपल्स है इसमें। अब देखिए स्कूल एजुकेशन में क्या है, न्यू NEP जो है, न्यू पेडागोजी एंड करिकुलर structure, 10+2 structure in school education will be modified with a new pedagogical and curricular restructuring of 5+3+3 4 covering the age of 3 to 18. Currently children in the age group of 3 to 6 are not covered in the 10+2 structure and class 1 begins at the age of 6. In the new 5+3+3 4 structure, a strong base of early education। तो यहाँ पर है, आप देख सकते हो उसमें हम ये अब है चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC फ्रॉम द एज 3 इज़ आल्सो इंक्लूडेड। तो इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें ये वाला स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, पहला जो है फाउंडेशनल है, प्रिपरेटरी है, मिडिल है, सेकेंडरी है, 5+3+3+4। तो आप यहाँ पर ये सारा देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने रखा है इसको। इसमें है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी यानी अर्जेंट एंड नेसेसरी प्रीरिक्विजिट फॉर लर्निंग। द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम विल बी टू बी यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल्स बाय 2025। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी सेट अप बाय द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन प्रायोरिटी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। उसके बाद ये वाला स्लाइड है प्रिपरेटरी क्लासेस, जो उसको हम बोलते हैं बलावतिका फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। Prior to the age 5, every child will move to preparatory class or balavatika, that is the before class 1, which has an ECC qualified teacher. Early child care and education curriculum is to be carried out by the MHRD, WOCD and HFW Tribal Affairs. The planning and implementation of early childhood care and education ECC will be carried out jointly by the Minister of HRD, Women and Child Development, Health and Family Welfare एंड ट्राइबल अफेयर्स। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेपरेटरी स्टेज में, और ECC को इम्प्लीमेंट करने में किन किन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये है उसमें है, और है उसमें ये वाला तो हो गया। अब यहाँ पर NEP 2020 एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन ऑल स्टेजेस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग विल बी इंक्लूडेड हैंड्स ऑन लर्निंग, आर्ट्स इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी अमंग्स्ट अदर्स एंड स्टैंडर्ड पेडागोजी। क्लासरूम ट्रांजैक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द competency based learning and education। NEP 2020 content will focus on idea application problem solving। The mandated content will focus on key concepts, ideas, applications and problem solving। Teaching and learning will be conducted in a more interactive manner। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो ये डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, इसको ड्रिल कर सकते हो ताकि आने वाले एग्जाम में ये आपका हेल्प कर सकता है। इसमें है ये जो NEP 2020 नो हार्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम्स फॉर स्टूडेंट्स विल बी गिवन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट्स टू स्टडी, particularly in secondary schools including subjects in physical education, the arts and the crafts, the vocational skills। There will be no hard separation among the curricular, extracurricular, co-curricular, among the arts, humanities and sciences between the vocational or academic streams। Subjects such as the physical education, the arts and the crafts and vocational courses, industrial science, humanities and mathematics will be incorporated throughout the school curriculum। Each of the 4 stages of the school education may be considered moving towards a semester or any other system that allows the inclusion of the shorter modules। तो ये important है इसमें डियर स्टूडेंट्स। इसमें जो है स्लाइड नंबर 17 में आपको दिखाया मैंने ये NEP 2020 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टॉक कार्ड्स रेगुलर हेल्थ चेकअप ऑफ फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स। द न्यूट्रिशन हेल्थ इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी एड्रेस्ड थ्रू हेल्दी मील्स एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप्स एंड हेल्दी कार्ड्स विल बी issued to the mentor the students। The 3 language learned by the children will be the choice of the state, regions and the students। The 3 language learned by the students will be by the choice of states, regions and of the students, so long as the least 2 of 3 languages are native to the India। So now see important points है इसमें
अब है यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी द लोकल और रीजनल लैंग्वेजेस वेयर एवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूनिट एट लीस्ट ग्रेड 5 बट preferably till to grade 8 and beyond will be the home language or mother tongue, local language, regional language. उसमें है bagless days encouraged. Bagless days will be encouraged throughout the year for the various types of enrichment activities involving the artists, quizzes है, sports है and vocational crafts है. ये इसमें दिया गया है. इसमें ये जो है importance of board exams to be reduced. Exam can be conducted twice a year. In order to reduce the importance and stress of the board exams, the exam will be conducted in 2 quarters, objective and descriptive. Exam can be conducted twice a year. Board exam should be promote knowledge application rather than rote learning. इसमें है 360-degree holistic report and card for the students. Students will get 360-degree holistic report card, which will not only inform about the marks obtained by them in subjects but also their skills and other important points. तो ये इसमें कुछ important points है जो मैंने आपको कल ऑलरेडी बोला है. इसकी जो ये पॉलिसी है इसमें क्या क्या important points है. NEP 2020 National Curriculum and Pedagogical Framework to be developed by the NCERT. तो ये है National Curriculum and Pedagogical Framework. National Curriculum and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education. उसमें है for children up to the age of 8 will be developed by the NCERT. Coding to be taught from the class 6 onwards. Students of the class and 6 and onwards will be taught coding in the schools as part of the 21st century syllabus. तो e-content in regional languages. So important points है इसमें हम शिफ्ट करेंगे. जैसे ये हमने बोला हाँ, इसमें हम ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट करेंगे. NEP वेरियस न्यू प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़. हाँ, वो जो प्रीवियस पॉलिसीज थी जैसे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें जो बहुत सारी पॉलिसीज आई थी डिसेबल्ड बच्चों के लिए, इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन लाई गई. चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज विल बी अनेबल टू फुली पार्टिसिपेट इन द रेगुलर स्कूल प्रोसेस फ्रॉम द फाउंडेशनल स्टेज टू हायर एजुकेशन विद सपोर्ट ऑफ एजुकेटर्स विद क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग, रिसोर्स सेंटर्स, accommodation, assistive devices, appropriate technology based tools and other support mechanism to suit their needs. Early stage district will be encouraged to establish bal bhavanas as a special daytime boarding school to participate in art related, career related, play related activities. Free school infrastructure can be used as a उसको बोलते हैं उसको उन्होंने बोला है सामाजिक. तो ये इंपॉर्टेंट है. चितना कंद्रियाज नो सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग दिस NEP 2020 ये वाला. हायर एजुकेशन में आप देख सकते हो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन टू डेवलप a good, thoughtful and well rounded and creative individuals must form the basis for the knowledge creation, innovations purpose of creation of greater opportunities for individuals employment, energizing of higher education through multidisciplinary universities, colleges, undergraduate education, faculty and institution autonomy etc. तो ये important points है इसमें. उसमें जो बोला है 3 types of higher education institutions, research universities, teaching universities, autonomous colleges. तो इन 3 के बारे में बात की गई है. multidisciplinary education research universities, उसमें है model public universities for the holistic multidisciplinary education at par with the IITs, IIMS and etc. So the important point regarding this very much policy, इसमें बहुत सारे points है. 25 में है स्ट्रक्चर. डिग्री प्रोग्राम 3 or 4 years ड्यूरेशन, सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year, डिप्लोमा आफ्टर कंप्लीटिंग 2 year, बैचलर्स डिग्री आफ्टर 3 year, मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री आफ्टर 4 years, मास्टर प्रोग्राम 1 or 2 years, 2 year with 3 years बैचलर्स डिग्री, 1 year with 4 years बैचलर्स डिग्री, इंटीग्रेटेड 5 year बैचलर्स मास्टर प्रोग्राम, PhD मास्टर्स डिग्री फॉर 4 years बैचलर्स डिग्री, MPhil प्रोग्राम डिसकंटिन्यूड. सो इम्पॉर्टेंट, देयर हैज़ बीन नो प्लेस फॉर द MPhil डिग्री. सो ये एजुकेशन पॉलिसी में है. तो ये आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. उसमें और एक पॉइंट है इसमें आप देख सकते हैं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम एम्स एट 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035. देयर विल बी अ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस फॉर दोज हु विश टू लीव द कोर्स इन द मिडिल. द क्रेडिट्स विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स. नेक्स्ट, फाइनेंशियल autonomy to be given to 45 affiliated colleges. There are over 45,000 affiliated colleges in our country. Graded autonomy, academic, administrative, financial autonomy will be given to colleges on the basis for the states of their accreditation. So ये भी important है dear students. उसमें है NTA to offer common entrance exam. National Testing Agency will offer a high quality common aptitude test as well as specialized common subject exams in science, humanities, language, arts, vocational subjects at least twice every year for the university entrance exams. National Committee for Integration of Vocational Education, Lok Vidya, that is important vocational education development in India, will be made accessible to students. The Education Ministry would constitute a national committee for the integration of vocational education. जो इसका मेन इस पॉलिसी का आप देख सकते हो. इसमें
इसमें है टीचर एजुकेशन के बारे में मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री ए न्यू एंड comprehensive national curriculum framework for teacher education 2021 will be formulated by National Council of Teacher Education in consultation with NCRT National Council of Education Research and Training. By 2030 the minimum degree qualification for teaching will be 4 year integrated BEd degree. So usko बोलते stringent action will be taken against the substandard standard alone teacher education institutions. तो ये है इसमें dear students important कुछ points है आप देख सकते हो। इसमें और भी बहुत सारे हैं, जैसे अब हम जाएंगे यहाँ पर और एक है सिंगल रेगुलर और इसमें है रेगुलेट। अब देखो ये जो है हायर एजुकेशन ये कॉमन रेगुलेटरी बॉडी फॉर द एंटरिंग हायर एजुकेशन, उसमें है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल सेट अप ए सिंगल ओवर रीचिंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर द एंटायर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लॉ लीगल एजुकेशन। हायर एजुकेशन जो है टू हैव 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन, जनरल एजुकेशन काउंसिल फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग्स, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फॉर फंडिंग, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल नेक फॉर एक्रेडिटेशन। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो दिया गया है। उसमें और भी बहुत सारे हैं, अब हम ये हैं स्टैंडर्ड में हैं और रेगुलेटरीज है और एक्रेडिटेशन है और फंड्स है। तो ये नेक एक्रेडिटेशन, GECO जनरल एजुकेशनल काउंसिल स्टैंडर्ड्स उसमें है जो वो रेगुलेशन के लिए एक से अलग सी है और जो है जनरल काउंसिलिंग के जो फंड्स है उनके लिए अलग है। तो ये 4 उसमें दिए गए हैं रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, एक्रेडिटेशन एंड फंडिंग। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है उसमें और भी बहुत सारे हैं, जैसे कैटलाइजिंग एकेडमिक रिसर्च हो जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी एस्टैब्लिश्ड, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड। द ओवर रीचिंग गोल ऑफ द NRF will be enable culture of research to be promoted through the universities. The NRF will be governed independent of the government by routine board of governors consists of the very first best researchers and innovators across the fields. तो ये इसमें important है, आप देख सकते हो कैटलाइजिंग एकेडमिक रिसर्च में ये वाले पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद है उसमें बहुत सारे अभी भी जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है वो है, जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ एंड इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें ज़बरदस्त है। डेडिकेटेड यूनिट फॉर डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग एंड डेडिकेटेड यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ द आउटस्टैंडिंग ऑफ बिल्डिंग ऑफ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कंटेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग विल बी क्रिएटेड इन MHRD to look after the education needs to be both school and higher education. Comprehensive set of the recommendations for promoting the online education consequent to be recent rise in the epidemics and pandemics in order to ensure the preparedness with alternative models of quality education whenever traditional and in-person modes of the education are not possible have been covered. तो ये इसमें important है इस वाली पॉलिसी में। उसके बाद है इसमें ये वाले पॉइंट्स है एडल्ट एजुकेशन के बारे में। टीच बेस्ड ऑप्शंस फॉर एडल्ट लर्निंग थ्रू द एप्स, TV चैनल्स, क्वालिटी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑप्शंस फॉर एडल्ट लर्निंग सच एज एप्स, ऑनलाइन कोर्सेज, मॉड्यूल्स, सैटेलाइट बेस्ड TV चैनल्स, ऑनलाइन बुक्स, ICT रिक्योर्ड लाइब्रेरीज, इक्विप्ड लाइब्रेरीज एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स विल बी डेवलप्ड। तो ये इसमें एडल्ट एजुकेशन के लिए बोला गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एडल्ट एजुकेशन के लिए। उसमें है अब है प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। Indian Institutions of Translation and Interpretation IITI proposed new education policy proposed the setting up of an Indian Institution of Translation and Interpretation will be also laying significant emphasis on the Sanskrit and other Indian languages. तो इसमें संस्कृत की बात की गई है डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें लास्ट में है न्यू स्ट्रक्चर जो है 5+3+3+4 एंड उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी। अब यहाँ पर हम नक्शल में ये वाला जो आप देख सकते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, लाइफ साइकिल्स, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हायर HRD मिनिस्ट्री एज एन एजुकेशन मिनिस्ट्री, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, फॉर्मेटिव असेसमेंट, मल्टीलिंगुअलिज्म, 5+3+3+4, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सो ये सारा इसमें है मेन पॉइंट्स आप देख सकते हैं। Thank you very much.